Good evening everyone and welcome back to my YouTube channel, Life Reviews with Bhagavad Gita, because every moment holds a shloka. Thank you so much first of all, which is very important because आप सबने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो के शॉर्ट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. हाँ, आप अगर जो व्यूज़ काउंट करने जाएंगे तो वो शायद थोड़े अभी कम थे, बट आई विल कंसिडर इट कि वो शुरुआत है तो ऐसा ही होगा. बट हाउ एवर, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे और मुझे कंग्रेचुलेट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं भगवद गीता की बात कर रही हूँ और मैं शाम को एक कॉर्पोरेट टावर के सामने वॉक करते हुए ऐसी वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसी वीडियोस किसी न किसी स्टूडियो या फिर एक बहुत ही काम से एनवायरनमेंट पर बैठ के बनाते हैं. बट यही एक फ़र्क है मुझ में और बाकी सब में, बिकॉज मेरा मानना है कि भगवद गीता सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए या एक फॉर्म में ही हेल्प नहीं करती है, वो हमें बहुत सारे फॉर्म्स में हेल्प करती है. उनमें से एक है कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, और मेरा एजेंडा है कि मैं अपनी सारी वीडियोस के साथ आपको हेल्प करूँगी कि आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें कैसे भगवद गीता का यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं. We start from chapter 1, which is called Arjun Vishad Yoga, and you would be surprised to know this chapter begins with not wisdom but with weakness. This chapter doesn't begin in between action but with hesitation. अब आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये शायद हम आज भी कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, व्हेन वी आर वर्किंग, इन आवर कॉर्पोरेट जॉब्स, इन आवर ऑफिसेज, एंड इट माइट बी इन आवर पर्सनल लाइफ एज वेल. अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप जो कि उनके साथी हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट पे, कि आप मुझे उन दोनों आर्मीज़ के बीच में लेके चलिए. दोनों आर्मी से मेरा मतलब है पांडवों और कौरवों के बीच लेके चलिए, और जहाँ से वो सारे के सारे कौरवों के चेहरे देख पाए. और जब श्री कृष्ण ऐसा करते हैं तो अर्जुन वहाँ पे जब बिल्कुल सेंटर ऑफ वॉर या फिर दोनों ही आर्मियों के बीच में जब पहुँच जाता है और वो देख पाता है कि जो सामने खड़े चेहरे हैं वो उनमें से कोई उसके भाई हैं, कोई उसके रिश्तेदार है, कोई उसके गुरु है, कोई उसके मेंटर्स है. जैसे ही वो उन्हें देखता है वो रियलाइज़ करता है क्या इस लड़ाई का कोई मतलब है, क्या मैं इन सबको मार करके जीत को सेलिब्रेट कर पाऊँगा. आपने कभी सोचा है कि हम भी ऐसा ही बिहेव करते हैं अपनी जॉब्स में? एंड डू यू इवन रियलाइज दैट दिस इज़ द फर्स्ट पैनिक अटैक registered in our spiritual history or literature? Yes, it was. Like we all, when we are at work, at times we face those moments when we know what we are doing is right, but it is not going into the right direction. And that moment hits hard to Arjun because he was trained, deeply capable, and of course he was prepared for a war. That's the reason both the armies were standing right there. And at that moment, Arjun says to Lord Krishna that he will not fight and drop his Gandhi. Have you ever realized how often this happens with all of us in our daily lives, at our offices? Have you ever thought about it, that you have prepared for a meeting and just seconds before the anxiety attacks comes in? Have you ever felt that you have been expecting to lead a team, but when the exact moment arrive, you feel that you can't do it, or this is not the thing you always wanted to do? And have you ever felt that you are climbing the ladder but you are losing the clarity on why you wanted to do this at the first place? Arjun's breakdown is our breakdown. Have you ever felt the anxiety just before Sunday or maybe Sunday night, because you know that you have to go to work on Monday? It is exactly the same how we feel. We get paralyzed before taking a bigger decision. This is exactly how we feel when we are emotionally burned out. This is exactly how we feel that there is a conflict between, or there is a stress between our targets, our values, performances versus our peace. Deeper message from chapter 1 is even the strongest can feel weak. Even our brain needs at times realignment before a bigger action, and it's okay. It's absolutely okay to feel like that, because courage is not absence of fear. It's moving through fear with guidance.
Now we all have awareness, the ancient wisdom with us, and most importantly, this moment to wait, reflect, and move forward. So the takeaways from chapter 1: when overwhelmed, pause, acknowledge the emotion, and then move forward. Always seek your Krishna, and it could be meditation, at times could be your inner voice, or might be any of a mentor, maybe ex-boss, maybe your friend, or maybe someone else around. Or, as I always say, it could be Bhagavad Gita, because for me, it has always been Bhagavad Gita. Because remember, wisdom begins with breakdown, not with perfection. If you have resonated even with one of the points or even with one of the emotions, do like and subscribe the channel, and let's begin the journey. Because every Thursday 7:30 you can watch the space, because I'll be coming up with the Gita verse by verse, and we'll try my level best to relate it with our daily life and how we can be the better version of us with the help of this ancient wisdom. Maybe we might not find the solution of every problem, but I can tell you we will always find the guidance.